So, hello everyone. I hope all of you are really happy after the examinations are over. Especially सीए फाइनल वाले लोग जो होंगे यार, एक दिल में खुशी होगी और बस वेट कर रहे हैं कि अब मैं सीए बन जाऊं। और भगवान से यही दुआ है कि आई विल क्वालिफाई दिस टाइम, फटाफट मैं सीए बन जाऊं। दैट इज समथिंग विच एवरी सीए फाइनल स्टूडेंट एम फॉर. But with this, everyone is asking one important question. Was CA final May 23 examination really tough? Right? क्या सही में tough था क्या? I'm going to be discussing this in detail. Plus also we are going to be discussing what next after CA examinations. Because after the examinations are over, many of you are again confused कि करे क्या भाई? अगर टाइम पास करे तो कैसे करे? Again, that is also a challenge for a lot of you because you're continuously studying for almost 5-6 odd months. So I'm there. I'm here for you to guide you in detail कि what all things you can do after examinations are over. But let us talk in detail कि क्या पेपर सही में tough थे. Now, one good thing I have done is that I have tried to upload a daily motivation video on my channel, on my YouTube channel. First thing. Second thing, what I was doing is that after your examinations are over, so every day what I used to do is that I used to put a poll saying that कि how was your daily paper, right, which is gonna be giving me a good idea about how the paper was all about. And definitely it also gave me a perspective that कि आप कितने स्ट्रेस में हो, टेंशन में, उस हिसाब से आई कैन मेक अ मोटिवेशन वीडियो. बट दिस इज समथिंग विच यू आर गोना बी डिस्कसिंग कि आपके पेपर कैसे आए थे इन डिटेल. So let us discuss for each and every paper which was there. The first paper was your FR. FR के लिए डिस्कस करते हैं जहाँ पे इफ यू कुड सी ओनली 44% said it कि ये भैया पेपर जो था सही था. बाकी जो जनता थी ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द पीपल फेल्ट इट द पेपर वॉज moderate or paper was hard. But to be very honest, if you consider this too, तो paper was looks more of a average which is there. और मैंने काफी सारे स्टूडेंट से पूछा तो एफआर का पेपर इजी था. एंड जनरली व्हाट हैव बीन सीन इन अ पास्ट अटेम्प्ट इज दैट दे आर गिविंग मोर ऑफ अ रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम देयर मॉड्यूल व्हिच इज देयर. एफआर में ये चीज इतना दिक्कत नहीं था एज कंपेयर टू एसएफएम. राइट, एसएफएम में क्या हो गया? एसएफएम में इफ आई सॉ राइट कि काफी लोगों को टफ लगा. अराउंड 71% ऑफ द पीपल फेल्ट इट वाज अ हार्ड पेपर, इट वाज अ टफ पेपर. राइट, अब ये मेरी वोटिंग पे नहीं है भाई, ये जनता 3000 लोगों ने वोट किया, उसके बेसिस पे आई एम जस्ट टेलिंग आउट. राइट, दिस इज ऑडियंस पोल है ना, जैसे आप केबीसी में देखते हैं, बस वही है. बट इसके साथ साथ वन थिंग विच आई हैव आस्क्ड द स्टूडेंट्स आउट, दे सेड दैट मोर ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द पास्ट अटेम्प्ट, पास्ट एमटीपीज, पास्ट आरटीपीज. तो वो एक थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा गुगली डाल दी थी एसएफएम पेपर में. राइट, तो दैट इज देयर. 71% ऑफ द पीपल फेल्ट इट वाज अ हार्ड पेपर. ठीक है, अब ये अनबायस्ड पोल है. फिर आते हैं हमारे ऑडिटिंग पेपर पे. ऑडिटिंग पेपर पे भी अगेन 59% ऑफ द पीपल वर सेइंग दैट द पेपर वाज नॉट सो ग्रेट, मतलब उतना अच्छा नहीं गया, थोड़ा सा पेपर लोगों को हार्ड लगा, कुछ नए क्वेश्चंस लगे. तो अगेन इफ यू कुड सी, अभी तो हमारे तक के 3 पेपर डिस्कस किए, उसमें से 2 पेपर टफ दिख रहे हैं. और उसके अलावा अगेन कॉर्पोरेट एंड एनालाइज लॉ, अगेन डिफिकल्ट पेपर, मतलब मोस्टली 50 से ज़्यादा % लोगों को ये टफ लगे हैं. एसएफएम, ऑडिट एंड लॉ, एसएफएम, ऑडिट एंड लॉ 50% से ज़्यादा लोगों को टफ लगे हैं. और जबकि एफआर जो देखा जाए वो 80% जनता को मोटा मोटी आसान या एवरेज लगा है, विच इज देयर. ओनली 16% ऑफ पीपल फेल्ट इट आउट, इट वाज अ हार्ड पेपर. तो व्हाट इज समथिंग विच आई कैन सी फ्रॉम अ ग्रुप वन में डेफिनेटली वन थिंग विच आई कैन सी इज द एफआर जो था थोड़ा सा इजी बोल सकते हो. बाकी जो 3 पेपर थे वर टफ इनफ फॉर फ्यू पीपल आउट. बट अगेन द क्वेश्चन कम्स हियर इज कि भाई इंस्टीट्यूट क्या करेगा. देखते हैं लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने क्या किया था. आई ऑलवेज बिलीव ऑन अ पास्ट डेटा, आई ऑलवेज बिलीव ऑन द रियल स्टैटिस्टिक्स एंड द नंबर्स विच आर देयर. लास्ट टाइम का पासिंग परसेंटेज इफ यू सी राइट, तो लास्ट टाइम 65,000 पीपल सेट, 13,000 पीपल क्लियर्ड. आउट ऑफ दैट मीन्स 21% ऑफ द पीपल वर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन आउट. ठीक है, अगर वो सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है तो सेकंड ग्रुप का है अलग है और बोथ ग्रुप का अलग है. तो अराउंड इस बार भी आई थिंक इसके आसपास ही नंबर होंगे, बस थोड़े से नंबर कम होंगे. बिकॉज इफ यू सी 3 साल पहले जो था वो कोविड वाला अटेम्प्ट था, तो लॉट ऑफ पीपल दोज वर इन आईपीसीसी राइट वर नॉट एबल टू गिव द अटेम्प्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ विच वो ट्रांजिशन, वो शिफ्ट नहीं आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में. तो थोड़े से स्टूडेंट आई थिंक इधर 50,000 के आसपास हो सकते हैं. राइट, 50-55,000 के आसपास रहेंगे स्टूडेंट्स, थोड़े से नंबर कम रहेंगे. बट यस, द पासिंग परसेंटेज आई एक्सपेक्ट टू बी ऑन अ सेम लाइन. तो दैट इज समथिंग अबाउट अ ग्रुप 1. Let us go and discuss and see for a group 2. Group 2 में if I see about SCMP, तो SCMP में 69% of the 70% of the people said it भैया अपना पेपर चंगा गया था. Right, it was very easy enough. So 70% of the people are saying it was easy paper. Coming to an elective now, elective is something which is very difficult to discuss because
Different people have different elective, but around 61% of the people were happy enough. Where I specifically talk about economic law and GFRS, the paper was quite simple enough. If you come to RM was more of an average paper as compared to the past attempt. मतलब थोड़ा सा level कम था as compared to past, but RM में एक चीज अच्छी थी, the MCQs were very simple, very good, easily have scored good marks in MCQ which are there. So this was something related to RM elective paper. Now moving to the DT paper, I if you see 50% जनता को, 50% से ज़्यादा जनता को it was a tough paper for them. 50% से ज़्यादा जनता को they felt out it was a tough paper, right? That means it's on a tough category. And IDT paper were stressful only 28%. Other people felt it okayish, मतलब average 32% को लगा, and excellent. That means great paper was 40% out. So I could consider more on a average or easy paper for IDT. So if we talk about group 1 में definitely the 3 papers were tough enough, right? Where audit, SFM and law. Group 2 में if you talk about DT paper was tough. DT कुछ attempt से थोड़ा सा tough ही आ रहा है, थोड़ा सा रूल आ रहा है, which is there. Now let us go and see again the percentages which are there. Passing percentage group last time के थे 18%, which was there. Again I am expecting on more on a same line between 15 to 25 का range रहेगा, which is almost all every time they are going to be having it out. Both group का which was 11% and 12,800 chartered accountants which were there, which qualified in the previous attempt which was there. Again I am expecting the same number, approximately 8 to 10,000 के आसपास chartered accountants पास होंगे इस बार भी, because the number of students sitting in this attempt were low as compared to the previous attempt, because I have told you COVID वाला चक्कर था. तो दैट इज ऑल अबाउट द टफनेस ऑफ अ पेपर, है ना. तो पेपर आपका जैसा भी गया हो यार, आप टेंशन नहीं लेना है. देखो आगे के जो 5-6 दिन है ना भैया, फुल आपके दिन है, पूरा एंजॉय करना है, विच इज गोना बी देयर. बट इसके साथ साथ अब बहुत प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, मैं तो आई वांटेड टू डिस्कस दिस थिंग्स विद इंपॉर्टेंट विद ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली. Now the question is what next after examinations. Number 1, ऐसे students those who have only given one group, है ना, कि सर मेरा एक ग्रुप था, एक ग्रुप बचा हुआ है, ग्रुप 2 दिया, ग्रुप 1 बचा हुआ है. आई वुड से दैट कि भैया देखो एक हफ्ता है, 28 तारीख तक के एंजॉय कर लो. फ्रॉम 29 में इज मंडे, अगेन मंडे एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है आप लोगों के लिए भी. तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन जस्ट, इफ यू हैव गॉन ओनली ग्रुप 1, एंजॉय फॉर अ फ्यू वीक and at least 1 or 2 week you can enjoy. Then please what you need to do is plan your studies out and start for studying for November 23 examination. ठीक है, प्लान करो बढ़िया से, स्टार्ट करो, बिकॉज दैट इज गोना बी द मोस्ट एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर योर लाइफ, वेयर यू गोना बी स्टडिंग इट आउट एंड क्लियरिंग द एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो एंजॉय करो और बढ़िया से आप पास हो जाओ नवंबर 23 में. दैट इज देयर. नाउ फ्रॉम माय साइड व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इज दैट आई एम गोना बी ऑर्गेनाइजिंग सम सेशंस. आई एम गोना बी कॉलिंग लॉट ऑफ रैंकर्स आउट वेयर यू कैन जस्ट सिट with them, make some study plan with them, and also I'm going to be personally posting some videos out how to prepare for November 23 examinations. ठीक है, तो study timetable कैसे बनाना, क्या बनाना, कैसे पढ़ना, right, how to allocate times, that is something which I am going to be discussing with you guys in detail. अब ऐसे बच्चे जिन्होंने एक ग्रुप दिया है या एक ग्रुप क्लियर हो चुका है या हैव गिवन बोथ द ग्रुप्स एंड वेटिंग फॉर एग्जामिनेशंस ऑन अ पॉजिटिव नोट, सेइंग दैट कि भैया इस बार मैं सीए बन जाऊंगा, या बिकॉज और फ्यू ऑफ देम आर वरीड अबाउट कि यार दे तो दिया है दोनों ग्रुप बट पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं, और दे दिया हूं बट आई एम वरीड अबाउट will I clear in this attempt, or worried about 1 or 2 पेपर, और few of them are very confident ना भैया अपन इस बार सीए बन रहे हैं, राइट. तो एक एटीट्यूड, एक चीज पता पड़ जाती है द टाइम यू कम आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन हॉल, एक अंदर से दिल ही बोल देता है कि यार चल अपना पेपर अच्छा गया है. नाउ one thing which not everyone or not every faculty encourages is something which I talk about in a profile building. What is profile building I am referring to? Say for example, I will ask you a simple question, or you can also ask yourself a simple question. Are you a different candidate as compared to others? मतलब क्या समझो, क्या आप बाकी लोग से अलग हो क्या? मान लो आपने भी सीए कंप्लीट किया, आपके दोस्त ने भी सीए कंप्लीट किया, आप दूसरों से अलग क्यों हो? If you could find this answer out, bang on, you'll do wonders in your life, and definitely you'll do wonders when you're gonna be sitting for a job interviews. As simple as that. But if you're not able to find it out, I would request, I would urge, I would definitely ask every one of you to work on your profile building. What does profile building means? Learn something new, learn some skill sets out, learn some art of a presentation, and definitely please start preparing for your interviews. I'm not saying it आज के आज करो, पहले तो एंजॉय करो भैया, दबा के एंजॉय करना, इतना एंजॉय करना कि भाई लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि भाई मैंने अब मस्ती नहीं की. ठीक है, अब कितना दिन मस्ती करेगा इंसान, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता करो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. बट उसके बाद डेफिनेटली एवरीवन इज गोना बी लुकिंग एट यू फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल वंस यू आर गोना बी क्वालिफाइड. मैं बता रहा हूं ना, आप अभी स्टूडेंट हो, जैसे ही रिजल्ट आएगा सीए बन गया है, लोगों का नजरिया बदल जाएगा.
तो सीए, ये तो सीए ऐसा बोलेंगे. So definitely the things and the perception is going to be changing. But one thing which people do not do during this time, utilizing a free time wisely by building out a skill set. Ask yourself a question, क्या मेरे अंदर वो 4 different qualities है क्या? Right? So learn some new skill set out, start preparing for interviews, and also please join some internships where your CV is something going to be differentiating from others. My lot of my friends is into top B schools. देखो क्या होता है, the day they enter into IIM campus, they say that कि भाई मेरा CV जो है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. आपका सीवी स्ट्रांग है कि नहीं, आपको खुद से अभी से सोचना है, और मैं अपने सीवी में क्या ऐसा बिल्ड डाउन करूं which is going to be helping you out to get into good companies, because companies are also going to be looking into the same. आप ऐसे ही थोड़ी किसी को हायर कर दोगे. तो दिस इज अ टाइम, दिस इज अ फ्री टाइम वेयर यू कैन यूटिलाइज दिस. आई एम नॉट सेइंग इट कि एंजॉय नहीं करो, मैं ये कह रहा हूं कि ये टाइम को सही से यूटिलाइज करो. ठीक है. तो प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करना, स्किल सेट्स कैसे बिल्ड डाउन करना, इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना, इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढना, फॉर एवरी डैम थिंग वी आर गोना बी हैविंग अ इवेंट ऑन द सेम, where you can go and register on our portal, which is again free of cost event, mentorship.camonk.com. Right? You can go to our website, link will be attached in the description. What I want you to do is just go and register it, join those events out. I am personally going to be taking those events out. I'm going to be telling you out what all things you can do. Since I am into this industry for almost 3 odd years, I have placed more than 8,000 chartered accountants into their dream companies. And you name the company, I've placed the people out there. That is not a problem for me. But the only thing is that you need to invest this time in a right direction. And this is a time where you can invest in. Okay, so that is something which I want you to do. You can just go to mentorship portal, you can just register for the events out. Just one more important update for the people, those who are genuinely looking for interview preparations and are ready to put their hard efforts. देखो आप एकदम effort डालने के लिए ready हो and definitely want to get into good companies, right? We have one good announcement, and that is we are gonna be coming with our interview training workshop, which is gonna be starting from 29th May. The timing of this batch is evening batch is gonna be 7 p.m. to 10:30 p.m. right? And this is something which we are doing it for almost 3 odd years, right? This is a 39th batch which is going to be coming. 38 batches complete ho chuki hai, right? So that is there. This is a curriculum for our getting interview ready workshop. Definitely I'll post a different video out on a YouTube. What is a workshop is all about, how you're going to be doing it. We are going to be working with different set of mentors. I'm going to be helping out with every damn thing needed for your professionality and profile building. Mark my words, प्री रिजल्ट की पहली बैच है ना, द प्री रिजल्ट बैचेस विच आर देयर आर दी बेस्ट बैचेस आउट, बिकॉज यहाँ पे टाइम ज्यादा होता है, माइंडसेट अलग होता है, इंसान का सीखने का जो भूख होता है ना वो ज्यादा होता है. आफ्टर रिजल्ट्स क्या होता है, यार सिर्फ सीए बन गया, अब बताओ कहाँ जाना है, सर मेरा कल डेलॉइट का इंटरव्यू बताओ. ऐसा नहीं होना चाहिए. You should learn, you should think, and you should decide which domain you can get into. That is why you will find the things which are marked in green. You'll find a lot of mentors joining in. You'll find a lot of people are going to be coming in, which is going to be helping you for your interview prep. और ऐसे वैसे मेंटर नहीं आएंगे. डेफिनेटली वी आर कोलेटिंग द लिस्ट, राइट? वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट मेंटर्स आउट, समवन विद 25 years of experience into industry, someone with 12 years of experience into industry, right? All the big 4 directors, partners, we are trying to bring all those people out for your interview training workshop sessions. Trust me, you're going to be loving this out. We'll also help you out to decide and go into that domain. Even if your articleship was not that great, nothing to worry. We'll also help you out to build your articleship exposure to a very strong level. We'll prepare for basic HR GDPI. We'll also prepare for a technical. We'll also give you domain wise guidance, and we are going to be there with you till the time you get placed into your companies out. ठीक है. तो बोलने का लिए ये वर्कशॉप जो है वो 10+4 days की है, राइट? 10 days का एक्चुअल वर्कशॉप है, प्लस 4 days बोनस है, बिकॉज इट्स अ प्री रिजल्ट बैचेस, दैट इज देयर. बट इसके बाद भी आपके बहुत सारे सेशन होंगे टिल द टाइम यू गेट प्लेस्ड इनटू योर गुड ड्रीम कंपनीज आउट. ठीक है. तो दैट इज समथिंग विच आई वांटेड टू अपडेट यू आउट. इसके अलावा काफी सारे इवेंट्स है. यू कैन जस्ट रजिस्टर फॉर दिस इवेंट्स. यू कैन विजिट आवर वेबसाइट mentorship.camonk.com. वी आर देयर विथ यू. वी वांट यू टू गेट इनटू गुड कंपनीज. वी वांट यू टू अचीव योर ड्रीम एंड माइलस्टोन विच आर देयर. सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल. बहुत सारे लाइव सेशंस, बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं विच इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट टू गेट इनटू गुड कंपनीज. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से दैट, लोगों को लगता है ना रिकॉर्डेड वीडियो देख के, यूट्यूब वीडियो देख के मैं कर लूंगा, नहीं होता. जब तक सामने वाला बोलता नहीं है ना कि भाई तू अच्छे से इंट्रोडक्शन दे, डांट नहीं पड़ती है, या जब तक तुमको पर्सनली नहीं बताए शिवम हाउ मेनी टाइम्स यू आर यूजिंग दिस फिलर वर्ड्स, राइट? ऑल दोस थिंग्स आर गोना बी पॉइंटेड आउट टू यू गाइस ड्यूरिंग आवर सेशन. ठीक है. एंड द टाइम यू इंटरैक्ट विद द पीपल आउट, आपका नेटवर्क बिल्ड होगा. द टाइम योर नेटवर्क इज बिल्डिंग आउट, डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट सम गुड रेफरेंसेस टू गेट इनटू गुड कंपनीज. ठीक है. तो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू कम्युनिकेट विद यू गाइस. बढ़िया से एंजॉय करिए अभी जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता. बट यस, साथ साथ में अपना प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनैलिटी बिल्डिंग और इंटरव्यू प्रेप भी ध्यान रखिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.